Armanin is the Chief Operations Manager of Special Economic Zone and Port of Dani in Rasta Karunestan. Memorandum of Understanding between Samruk Energy and the Bharat Kivi Electricals Limited. Memorandum of Understanding between Kaznex Invest and Invest India. The work plan and agricultural cooperation between Kazakh Renovation and the ICAR. Agreement on cooperation for establishing bilateral business council between Kazakhstan Chamber of International Commerce and the Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry. Let me thank all participants. The ceremony is over. Now I would like to give a floor to the Minister of Investment and Development of the Republic of Kazakhstan, Mr. Aset Isikeshov. Құрметті Өзбекстан Республикасының премьер-министрі Елшісі мистер Моди, құрметті Қазақстан Республикасының премьер-министрі Елшісі мистер Насипов, құрметті ханымдар мен мырзалар, сіздерді Қазақстан Өзбекстан инвестициялық форумында қарсы алуға қуаныштымын. Ladies, on behalf of all participants of Business Forum, thanks Prime Minister for attending our event. We have here more than 100 businessmen from Kazakhstan and India. It shows us the big interest from the both sides. Today we have signed a roadmap for trade, economic and investment cooperation between Kazakhstan and India, including 26 potential investment projects. 12 documents out of these projects are signed today. We are sure that it will become a strong cooperation bridge between our countries. Ladies and gentlemen, for a welcome speech, let me give the floor to the Prime Minister of Kazakhstan, Mr. Karim Masimov. Your Excellency, Prime Minister Modi, distinguished guests, ladies and gentlemen. It's an honor to welcome you today at this important forum. I'm especially pleased to see so many eminent business leaders and member delegations from India. Kazakhstan and India have a special relationship based on shared history and values. India was one of the first countries to recognize Kazakhstan after we gained our independence more than 20 years ago. In fact, India was the first country outside the CIS that President Nazarbayev visited as a leader of our new nation. But our relationship runs far deeper than that. Ties between our countries stretch back more than 2,500 years when members of the Saka tribe traveled India. And today, we both take our place in the international community as modern nations that are proud of our diverse, multi-ethnic, multilingual, and multicultural society. Two nations that believe in non-interference in the domestic affairs of others, in the non-use of force to settle international disputes, and in the sanctity of territorial integrity. Two nations that understand the grave threat posed by extremist ideology and are committed to opposing radicalism and terrorism both at home and abroad. We are therefore natural partners with no obstacle of history, beliefs, or international perspective to impede development of closer bilateral ties. With hard work and effort, our relationship has a great future. In recent years, India has demonstrated its role as a major economy and global trade partner, expanding into Central Asia and Europe.
India's policy of Connect Central Asia is a vision that sees Central Asia as an emerging region which opens up new trading opportunities all the way from Europe to the Far East. We support this vision. Indeed, Kazakhstan is an ideal partner to realize this vision. We are the largest economy in Central Asia and account for more than half of India's trade with countries in the region. In the past decade alone, Kazakhstan economic growth has more than doubled, making it one of the 10 highest performing economies in the world. We are a magnet for foreign investment, attracting inward flows of almost $200 billion, some 3/4 of all FDI into Central Asia. We are also partners for some of the most significant transport and infrastructure projects in the region. And through our membership of key institutions with the Eurasian Economic Union, we play a critical role in Central Asia affairs that bridges East and West. This strong sense of purpose as a bridge between East and West in the region is underlined by a clear vision of where we as a nation want to be. By achieving durable and sustainable reform within our country, we have the capacity to participate more effectively as a member of international community. In this context, Kazakhstan and India are ideal partners. We both have a vision for our nations built on strengths at home and practical engagement abroad. And we both have the capacity and desire to realize that vision through long-term planning and effective cooperation. However, to fulfill our potential, we need to make more of the strengths of our respective economies and the opportunities they present. Here, I would like to make several concrete suggestions. First, we encourage Indian investment in Kazakhstan. In this regard, I'm encouraged by the number of important agreements that will be signed between our respective business communities today. But we are ready to facilitate a far higher level of investment in areas of mutual interest, such as agriculture, agricultural productivity, information and communications technology, and petrochemicals, among other areas. Second, we should improve collaboration in the higher education sphere. India's prestigious institutes of technology are leaders in many areas of need here in Kazakhstan, such as engineering, research, and computer science. We encourage tangible cooperation with our leading institutions, such as Nazarbayev University, where you had a great speech today. Congratulations, Mr. Prime Minister. Third, we encourage Indian participation in our new Astana International Financial Center. This center of excellence will be based on the principle of English law and represents a beacon for the entire region. And thank you very much. Today we make a proposal to cooperate with a similar financial center in your state. And fourth, we encourage the creation of economic committee between our two countries. This committee would meet annually to launch, manage and monitor common projects and policies. And Mr. Prime Minister, this is very important. As we agreed, we established this committee, and we will find who is responsible for what, and we can meet from time to time and check how things are moving forward. Esteemed guests, colleagues, friends, these initiatives are just the first step of what we can achieve together. But there is a well-known Indian proverb that success needs very hard work. And you are doing it yourself, Mr. Prime Minister. Today's forum gives us an important opportunity to engage and begin this work. Now is the time to take our partnership to another level and realize the enormous potential our countries have to offer. I wish you every success. Thank you very much for your attention. Thank you very much. Your Excellencies, dear ladies and gentlemen, in 2011, the National Oil Company Kazmunaygas and Indian company ONGC signed agreement on Project Satpaya. Let me now start a teleconference with the Atara region for the official launch of the first exploration well in the block Satpaya.
Уважаемый Кашимканович, уважаемый господин Моди, Dear Karim Kashmkanovich, dear Mr. Modi, let me welcome you and inform about the important milestone of the exploration project Sapphire, the commencement of the first exploration well drilling, which is implemented by the national company Kazmunaygas jointly with ONGC Videsh Limited and symbolizes the successful cooperation between the two countries in the field of energy. Ensuring growth of hydrocarbon reserves is one of the most important objectives set by our president before the country's oil industry workers, and this project is a bright example of implementation of Kazakhstan 2050 strategy by the national company Kazmunaygas. Let me thank the governments of both the countries for their support to the project and congratulate you on the successful start of drilling. Honorable Prime Minister of India and Honorable Prime Minister of Kazakhstan, we feel privileged and honored to witness this historic occasion wherein our Honorable Prime Minister is here with Honorable Prime Minister of Kazakhstan. Sir, it is a moment of great pride and joy for ONGC Videsh to welcome you to this milestone event, formal launch of the commencement of drilling of the first exploration well STP-1 of Sapphire project. We are thankful to our partner, National Oil Company Kazmunaygas, and the government of Kazakhstan for every help and support in reaching this milestone. We stand committed to our obligations and are confident of achieving our objectives successfully in this project. ONGC Videsh believes that success of this project will mark the beginning of a long and valuable partnership between the companies and the two nations, India and Kazakhstan. Уважаемый Карим Кашимканович, уважаемый господин Моди, Dear Karim Kashmkanovich, dear Mr. Modi, you are kindly requested to give us permission to start drilling on the first exploration well on Sapphire block. In 2014, the government has implemented a new package of reforms, among which visa-free regime for 10 countries, and it was recently announced by our president that there will be a visa-free regime for 10 more countries. So in total, we will have 20 countries with visa-free regime, and we believe that this will help to attract many more investors. According to investment agreements, we also have easier work permit procedure and many other tax incentives. In the new package of tax incentives, we have even more good things. We have exemption from corporate income tax for 10 years. We have exemption from land tax and property tax, and we have an unprecedented measure as cash back up to 30% on all capex in excess of $20 million of investments. In Kazakhstan, we have 10 free economic zones with very easy tax regime and customs regime. They are located in different parts of Kazakhstan and specialized in different sectors of economy. But there, investors can find very favorable tax conditions and custom conditions
as well as good management now. The government is working to attract management companies from all over the world, such as DP World and Jurong, to manage these free economic zones, and we hope to create greenhouse conditions for investors in those free economic zones. As Kazakhstan is situated just between huge markets of Russia and China, and naturally situated to be a natural crossroad for transit corridors from east to west and north to south, Kazakh government has launched a program to build a new motorway between China and Western Europe, and goods can be delivered on this route from China to Western Europe just in 10 days, which is a very critical thing for many industries. So we believe that logistics is a very important sector, and this can boost investments in Kazakhstan. We have quite a few foreign investors which already started and set up their production in Kazakhstan. They're very well-known names, and we welcome you to follow their example and set up your manufacturing facilities and other facilities here in Kazakhstan. You can find more information on our websites, on very modern e-government resource and our website, as well as the website of Ministry of Investments and Development. Thank you for your attention. Thank you very much. The next speaker is the Deputy Chairman of the Board of National Welfare Fund, Samruk-Kazyna, Mr. Dauren Yerdebay. Thank you, Minister. Your Excellency, Prime Minister Modi, Karim Kazhimkhanovich, dear ladies and gentlemen, it's a pleasure and honor for me to introduce to you today the Sovereign Wealth Fund Samruk-Kazyna. Our organization was established in 2008 by acquisition of major assets under a government ownership and collecting them in one structure under a single umbrella. Our main challenge is development of governance quality to reach our key goals. The prime goal is the increase of value of our assets, and two sub-goals, which are diversification of our industries and social responsibility through support of private sector. Our assets are in traditional sectors in Kazakh economy, such as resources, infrastructure, industrial assets. We produce 25% of all oil and gas in Kazakhstan. We hold 40% of power generation assets, and we have a group of monopolies in such sectors as power transmission, railroads, and etc. Our ambition is to increase and double returns to our shareholder, improve operational efficiency and productivity of our resources. We are also targeting increase of employment in Kazakhstan. We are welcoming our dear friends from India to look into opportunities which are provided by our privatization program within Samruk-Kazyna, and we look forward to our cooperation. Thank you. The last speaker is the Deputy Chairman of National Investment Holding Bayterek, Ms. Alina Aldobergen. Dear ladies and gentlemen, Your Excellencies and distinguished guests, let me present the holding Bayterek. National Managing Holding Bayterek was created in 2013. We unite 13 development institutions which are involved in promoting the sustainable economic development of Kazakhstan, supporting priority sectors, helping to and assisting development of small and medium-sized businesses, and also involved in resolving social-oriented tasks of the government. We are currently working on 3 state programs, such as Industrial and Innovation Program, Program of Regional Development, and Program of Business Support and Development. Priority program right now is implementation of Nurly Zhol program, which I'll talk about later. Assets of the holding are $13 billion. Last year, net profit was about $225 million. We have ratings the same as the sovereign, BBB+ and BBB from Fitch and S&P. The result of our work is financing and providing investment to priority sectors that helps to create additional workplaces, support the development of medium-sized businesses, and that's what we have done lately. In 2013, we supported 3,300 SME by providing different subsidies and providing support, financial, non-financial support.
We would like to invite you to participate in our investment funds. We have created last year Kazakhstan Infrastructure Fund. The priority sectors of that fund will be investment in transportation and logistics, power generation facilities, heat and water supply distribution facilities. And if you're interested in these projects, we welcome discussion with you. We are involved in implementation of Nurul program, such as construction of rent-own apartments, providing financial support to small and medium-sized businesses in current situation, also assisting export and priority manufacturing industries like automotive, different machines, and other. We are also right now working on attracting of large transnational companies. We identified a number of industries such as food industry. We have concrete projects in that sectors: chemical industry, glass manufacturing, automotive industry, and textile industry. So if you're interested, we're welcome to discuss it with you. Thank you. Thank you very much, Your Excellencies, distinguished guests. Let me give the floor to the Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi. आदरणीय प्रधानमंत्री जी और दोनों देशों के प्रमुख उद्योग जगत के प्रतिनिधि, भाइयों और बहनों, Уважаемый respected Prime Minister of Kazakhstan and the representatives of the industrial world of both the countries, ladies and gentlemen. प्रश्न में करने वाली हूँ कि अंग्रेजी में क्या चाहिए? На русский или на английский? Как перевести? Уважаемый премьер-министр Казахстана, все представители мира промышленности двух стран, дамы и господа. मैं खास करके आपने जो प्रेजेंटेशन किया, मुझे पूरा भरोसा है कि भारत से आए हुए लोगों के लिए अपने आप में एक बड़ा ही प्रभावी दर्शन हुआ होगा कि एक छोटा सा देश इस प्रकार से प्रगति कर रहा है। 10 साल के भीतर अपनी जीडीपी को 4 गुना कर दिया और विकास का रोड मैप लेकर के किस प्रकार से वो आगे बढ़ रहे हैं, वो अपने आप में मुझे विश्वास है कि किसी को भी प्रभावित करने वाला आपका ये सारा इतिहास रहा है और प्रयास रहा है। Презентации, которые вы сегодня сделали, я думаю, что они очень впечатляют всех индийцев, которые здесь существуют. Это сразу было видно, страна маленькая, а прогресс огромный. За последних 10 лет вы увеличили ВВП страны на 4 раза, очень успешно работали в области развития экономики, идете вперед упорно. Я думаю, что все ваши достижения могут только очень впечатлять всех, которые здесь присутствуют. जिस प्रकार से आपने एक आर्थिक ढांचा खड़ा किया है, जिसके कारण किसी को भी इन्वेस्टमेंट करना है, आपके साथ पार्टनरशिप करनी है, तो काफी कुछ सुविधाजनक व्यवस्था आपने विकसित की है। Здесь вы создали такую экономическую рамку, что любой, который хотел бы делать инвестиции в вашей стране, хотел бы иметь партнерство с вами, я думаю, что есть очень хорошие льготные условия для них. एक लैंडलॉक कंट्री होना और दो बहुत बड़े देशों के बीच में गुजारा करना, हमारे यहाँ कहा जाता है कि बहुत बड़ा जब पेड़ होता है तो उसके नीचे कोई छोटा पौधा बड़ा नहीं हो पनपता है।
लेकिन उन दो बड़े देशों के बीच भी आपने बहुत ही आग्रहपूर्वक और मक्कमतापूर्वक अपने देश को आगे बढ़ाया है, वो सचमुच में काबिल-ए-दाद है। Ваша страна является, то есть не имеет выхода на море, а местонахождение вашей страны также это географически между двумя большими державами. Но все равно вы очень успешно вели свою программу экономического развития. Говорят, что если есть большое дерево, под ним маленькое какое-то растение, трудно этому растению расти. Но вы показали, как вы смогли упорно и очень успешно работать, какие у вас возможности, какой у вас талант. भारत और कजाकिस्तान के बीच बहुत सारी संभावनाएं हैं, लेकिन आज सुबह मेरी प्रधानमंत्री जी से बात हो रही थी कि हमारे संबंधों को विकसित करने के लिए, आर्थिक संबंधों को और ताकतवर बनाने में हमारा सबसे बड़ी दिक्कत है वो कनेक्टिविटी की है। इन दिनों इस रीजन के सभी देशों ने मिलकर के भारत के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने की दिशा में बड़े सार्थक प्रयास शुरू किए हैं। मैं मानता हूं कि रेल मार्ग से, रोड मार्ग से और सी रूट से व्यापार की दृष्टि से हमारी कनेक्टिविटी जितनी बढ़ेगी और जितनी जल्दी बढ़ेगी, भारत जैसा देश कजाकिस्तान के साथ पार्टनरशिप करके एक प्रकार से विन विन सिचुएशन वाला प्रोग्रेस हमारा हो सकता है। Есть большие возможности в разных направлениях для сотрудничества между Индией и Казахстаном. Как мы сегодня говорили с премьер-министром Казахстана, что есть такие большие возможности, но препятствие сейчас это заключается в том, что у нас нет достаточной связи, транспортной, физической связи между нашими двумя странами. Но многие страны в этом регионе уже развивают транспортные связи, я думаю, и это в областях и наземного транспорта, и морского транспорта, транспорт и железной дорогой. Если мы можем это быстро развивать, я думаю, что в партнерстве с Казахстаном мы будем только идти вперед и развивать наши отношения, наши экономики на взаимовыгодной основе. आपके पास प्राकृतिक संपदा का अपार भंडार पड़ा हुआ है। देश विशाल है, जनसंख्या बहुत कम है, प्राकृतिक संपदाओं का अंबार है। ऐसा बहुत कम लोगों के नसीब में होता है जो आपके पास है। У вас есть очень богатые природные ресурсы, огромные ресурсы, страна ваша огромная, территория большая, а народонаселение маленькое. Я думаю, мало кто из стран мира имеет такие хорошие возможности развития. और दूसरी तरफ भारत एक विशाल देश, बहुत बड़ी जनसंख्या और बहुत बड़ी डिमांड। जो चीजें आपके पास हैं उन सारी चीजों की भारत को आवश्यकता है। एक प्रकार से वी आर मेड फॉर ईच अदर जैसा है। आपके पास प्राकृतिक संपदा है, हमारी यहाँ आवश्यकताएं हैं। अगर हमारा सहयोग जितना बढ़ेगा उतना विकास के लिए दोनों को बहुत ही लाभ हो सकता है। Индия это, а с другой стороны, Индия это большая страна, территория большая, и народонаселение большое. И важнее всего, большой у нас спрос. Все, что у вас есть, все богатство, все природные ресурсы, мы нуждаемся во всех этих. И я думаю, что мы именно созданы друг для друга. В Казахстане есть очень богатые природные ресурсы, а у Индии есть спрос. Если мы можем сотрудничать, я думаю, что у нас будет развитие экономическое в обеих наших странах. आपके लिए टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आधुनिक टेक्नोलॉजी जितनी आपको उपलब्ध होगी उतना ही आपको जो आपका गोल है कि दुनिया की टॉप मोस्ट इकोनॉमी में अपनी जगह बनाना, उस गोल को आप 2050 के पहले भी पूरा कर सकते हैं अगर इस प्रकार की सपोर्ट सिस्टम खड़ी होती है।
Вы сейчас нуждаетесь в современной технологии. Я думаю, что именно современная технология будет помогать вам достигать все, что вы поставили для себя как цель, выполнить свою задачу, включить свою страну в самые развитые экономики мира. Я думаю, что с правильной поддержкой вы можете это достичь даже до 2050 года. आज देखा हम लोगों ने कि कास्पियन सैंड में हम लोगों ने ड्रिलिंग का काम आज आरंभ कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी के माध्यम से यहाँ से बैठ कर के ड्रिलिंग का प्रारंभ हुआ। हाइड्रोकार्बन सेक्टर में आपकी बहुत बड़ी ताकत है। भारत की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। एनर्जी का हमारा सबसे बड़ा सोर्स यही है। अगर भारत की कंपनियों को लिए यहाँ हाइड्रोकार्बन क्षेत्र के अंदर काम करने के लिए, ऑयल सेक्टर में काम करने के लिए अगर सुविधाएं बढ़ती हैं, उनको एक एश्योर्ड व्यवस्थाओं का अगर अवसर दिया जाता है, तो मुझे विश्वास है कि भारत से ऑयल सेक्टर में, हाइड्रोकार्बन सेक्टर में बहुत बड़ी संख्या में भारतीय कंपनी कजाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ सकती हैं और नई टेक्नोलॉजी लेकर के आ सकती हैं। Мы видим, как играет большую и важную роль технология сегодня. Здесь же именно несколько минут назад мы смотрели, как мы начали бурение в Каспийском море. Это начали новую скважину. Это все с помощью технологий. Уже сидя здесь, началось бурение в Каспийском море. Казахстан является очень сильным государством в области углеводородов, а Индия является большим рынком, имеет большой спрос. Для нас Казахстан является большим источником углеводородов, и индийские компании интересуются работать вместе с вами в секторе углеводородов, в секторе нефти. Если здесь будут представлены нам хорошие условия, приемлемые условия, тогда я уверен, что индийские компании в большом масштабе захотят сделать здесь инвестиции и привести с собой новые технологии. आज अभी मैं यहाँ आने से पहले यूरेशियन नेशनल यूनिवर्सिटी में था और वहाँ पर भारत की मदद से सुपर कंप्यूटर के द्वारा यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए एक नई व्यवस्था विकसित की जा रही है। हम कल्पना कर सकते हैं कि आज के युग में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, डिजिटल वर्ल्ड, उसमें भारत का अपना एक रुतबा है। भारत आपके साथ मिलकर के इसमें काफ़ी कुछ प्रगति के क्षेत्र में काम कर सकता है। वो एक ऐसा क्षेत्र है कि जो आपकी पीढ़ी के लिए बहुत आवश्यक है और मैं समझता हूँ कि भारत की कंपनियां यहाँ आकर के बहुत बड़ी मात्रा में इन्वेस्ट भी कर सकती हैं और उसको प्रमोट भी कर सकती हैं। Перед тем, как я сюда приехал, я посетил Евразийский университет, а там также мы установили Центр информационных технологий, где мы установили индийский суперкомпьютер. Я думаю, что это очень содействует обучению казахских студентов, чтобы они могли идти вперед в мире информационных технологий, в цифровом мире. Индия может в этом работать с вами, и я думаю, что такое сотрудничество это пригодится вам. Если в будущем возможно, что индийские компании могут к вам приехать и делать и инвестиции, и работать с вами в этом секторе. एग्रीकल्चर सेक्टर में भी खास करके मिल्क प्रोडक्शन में आपके यहाँ काफ़ी मात्रा में मिल्क है। भारत में अमूल का एक प्रयोग हुआ है, वो सफलता प्रयोग हुआ है वैल्यू एडिशन में। मैं समझता हूँ कि वो भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है कि जहाँ पर भारत के साथ मिलकर के काम हो सकता है।
Еще одно направление, где мы можем сотрудничать, это сельское хозяйство, особенно в области молочных продуктов и производства молока. У нас есть такой кооператив в Индии, называется Амул. Они очень хорошо работают в области добавления стоимости. Я думаю, что для сотрудничества здесь есть хорошие перспективы. एनवायरनमेंट की समस्या के साथ दुनिया जो जूझ रही है, भारत उस समस्या को बहुत ही एग्रेसिवली एड्रेस करने की दिशा में काम कर रहा है। हम लोग 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में जा रहे हैं। 100 गीगावाट सोलर एनर्जी, 75 गीगावाट रिन्यूएबल एंड विंड एनर्जी, एक बहुत बड़ा एम्बिशियस प्रोग्राम है। मैं समझता हूँ कि आपके पास जो सॉवरिन फंड है और आपके पास जो कंपनियां हैं, वो भारत में बहुत बड़ी मात्रा में इस क्षेत्र में भी इन्वेस्ट कर सकती है। उसमें भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए भी स्कोप है, जो कि भारत की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। Еще одна сфера, где мы работаем, это касается окружающей среды. Весь мир сейчас сталкивается со всякими проблемами загрязнения окружающей среды, а в Индии мы очень агрессивно работаем и боремся с этим загрязнением. Мы работаем в области источников, возобновляемых источников энергии. У нас цель поставлена на производство 175 гигаваттов энергии из возобновляемых источников, 100 гигаваттов солнечной энергии и 75 гигаваттов ветерной энергии. Амбициозная у нас эта программа. Я думаю, что и Казахстан, используя свой суверенный фонд, и даже казахские компании могут делать инвестиции в этом секторе в Индии еще для производства оборудования. आपके राष्ट्रपति जी ने नुरली जोल एक बड़ा एम्बिशियस प्रोग्राम शुरू किया है। भारत में भी मेक इन इंडिया एक उसी प्रकार का समान प्रकार का कार्यक्रम है, और इसलिए हम मेक इन इंडिया के लिए इनवाइट करते हैं। आपके पास रॉ मटेरियल भी है, संपदा भी है, और भारत के पास यूथ फोर्स है। अगर भारत में आप इन्वेस्टमेंट कर करके आपकी भी रिक्वायरमेंट की पूर्ति के लिए इन दिशा में भी काफी कुछ मात्रा में आप भागीदारी कर सकते हैं। У вашего президента есть государственный план Нурли-Жоли, а у нас в Индии такая же программа, называется «Сделай в Индии». Я приглашаю вас приехать к нам, участвовать в нашей программе «Сделай в Индии». У вас есть сырье, у вас есть возможности, а у нас есть молодежь, рабочая молодежь. И я думаю, что мы здесь можем найти совместные направления работы, можем работать в партнерстве. कॉस्ट इफेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको इंजीनियरिंग स्किल की रिक्वायरमेंट है। भारत की कंपनियां के साथ जुड़ने से उस रिक्वायरमेंट की पूर्ति इंजीनियरिंग स्किल की एंड कॉस्ट इफेक्टिव व्यवस्था की आपको बड़ी आसानी से उपलब्ध हो सकती है। Вообще для бизнеса, для развития промышленности очень необходимо иметь возможности производства. И не только производства, но производства, которое является конкурентоспособным. И для производства нужны навыки, инженерные навыки, навыки машиностроения. Я думаю, в партнерстве с индийскими компаниями мы можем работать на взаимовыгодной основе. ये आप छोटे से देश ने पिछले 10 साल में करीब $30 बिलियन का दुनिया में अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन भारत में बहुत कम मात्रा में है। अब जैसे रेलवे के सेक्टर में, जो कि एक एस्टैब्लिश व्यवस्था है और बहुत बड़ी रेलवे है भारत की, दुनिया की सेकंड लॉन्गेस्ट रेलवे ट्रैक और रेलवे नेटवर्क है। अब 100% FDI हमने ओपन अप किया है। बहुत बड़ी मात्रा में एग्जिस्टिंग व्यवस्था के साथ आप इन्वेस्टमेंट कर करके भारत को जो रेलवे को मॉडर्न बनाने का एक बहुत बड़ा काम चला है और बिलियंस ऑफ डॉलर का काम है, तो आपकी काफ़ी कंपनियां उसके साथ भी जुड़ सकती हैं।
Страна ваша маленькая, но за 10 лет вы сделали инвестиции на уровне 30 миллиардов долларов США в разных странах мира, но не на таком уровне у нас в Индии. Приглашаем вас, приезжайте к нам, у нас есть такой сектор железных дорог, это у нас вторая самая большая сеть железной дороги вообще в мире. Мы теперь открыли инвестиции, 100% иностранной прямой инвестиции в этом секторе. У нас есть новая большая программа для модернизации наших железных дорог. Я думаю, что здесь миллиарды долларов можно делать инвестиций. Это на таком масштабе мы планируем. Приглашаем казахские компании приехать к нам в этот сектор. आपने 20 साल के भीतर अस्थाना का रंग रूप बदल दिया, उसको एक मॉडर्न सिटी में आपने कन्वर्ट कर दिया है। आपके पास ये एक्सपीरियंस है। भारत में हमने 100 स्मार्ट सिटी का एक मिशन हाथ में लिया है। मैं समझता हूँ जो अर्बन डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड ग्रुप्स हैं उनके लिए ये स्मार्ट सिटी का हमारा जो कंसेप्ट है उसमें भागीदारी करने की बहुत संभावना है। भारत में हम हर व्यक्ति को, नागरिकों को घर देना चाहते हैं। करीब 50 मिलियन से भी ज़्यादा मकान हमको बनाने हैं आने वाले कुछ वर्षों में, यानी बहुत बड़ा ह्यूज काम है। दुनिया का एक नया देश एक प्रकार से निर्माण करना हो तो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर जो कॉमनवेल्थ की रिक्वायरमेंट है उसके लिए भी बहुत संभावना है। आपकी जो कंपनियां हैं, आपके जो सोवरेन फंड्स हैं, उसके द्वारा भी उसमें आप काफ़ी कुछ योगदान कर सकते हैं। За 20 лет вы построили уже с нуля ваш город Астану, начали с нуля, а теперь мы уже видим, сколько здесь изменений в Астане. Это совсем новый, прекрасный такой город, у вас теперь есть хороший опыт. А мы в Индии, у нас есть программа создания, строительства 100 умных, новых, современных городов, те, которые работают в области развития городских районов. Я думаю, что в партнерстве с ними мы можем работать. Еще у нас есть цель поставлена, чтобы строить дома для жилья, для всех людей, всех граждан Индии. Хотим 50 миллионов домов за следующие годы строить у нас. Это большие инвестиции там нужны. Хотим создать совсем новую страну у себя. Большие у нас планы в области инфраструктуры и хорошие большие возможности для инвестиций, для совместной работы на основе вашего суверенного фонда, на основе работы с казахскими компаниями. आप एक बहुत बड़ा सपना फाइनेंस सिटी बनाने का कर रहे हैं। उस फाइनेंस सिटी के साथ टेक्नोलॉजी बहुत अनिवार्य होती है, क्योंकि जब तक कि टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी एश्योरेंस नहीं होता है, फाइनेंस सिटी आजकल संभव नहीं है। एक बहुत बड़ा क्षेत्र आप सोच रहे हैं और आप जो एक्सपोर्ट 17 कर रहे हैं वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भविष्य में आप फाइनेंस सिटी में कन्वर्ट करने वाले हैं। उसमें टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप, टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी, भारत की बहुत कंपनियां हैं जो आपके साथ इसमें काम कर सकती हैं। Вы рассказали о вашей мечте, о вашей идее создания Центра финансовых услуг на основе Экспо 2017. Без технологий, я думаю, что это невозможно для любого такого проекта. Очень нужно иметь информационные и коммуникационные технологии, еще и безопасные условия для работы. Здесь, я думаю, индийские компании могут быть вашим партнером. तो ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां हम लोग मिलकर के काम कर सकते हैं, चाहे स्पेस का क्षेत्र हो, चाहे साइबर सिक्योरिटी का क्षेत्र हो, चाहे डिजिटल वर्ल्ड के साथ कनेक्टिविटी का विषय हो, या फिजिकल कनेक्टिविटी का विषय हो, या इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो, या हेल्थ सेक्टर हो। इतने क्षेत्र हैं कि जिसमें भारत और कजाकिस्तान मिलकर के अनेक विषयों में आगे बढ़ सकता है। और आज दोनों देशों के प्रमुख उद्योग जगत के मित्रों से मिलना हुआ है और प्रधानमंत्री जी भी आज सुबह से उनके साथ लगातार मेरी अनेक विषयों पर बातचीत हो रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी ये यात्रा सेंट्रल एशिया की दृष्टि से और विशेष करके कजाकिस्तान की दृष्टि से
बहुत ही महत्वपूर्ण और एकदम से सफल यात्रा के रूप में मैं देख रहा हूं, जो आने वाले दिनों में हमारे आर्थिक संबंधों को और अधिक गहरा बनाएंगे और प्रगति की नई ऊंचाइयों को पाने में हम कंधे से कंधा मिलाकर के आगे बढ़ेंगे। इस विश्वास के साथ मैं फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। Есть, так что вы видите, есть большой диапазон, большой круг направлений, где мы можем сотрудничать, будь то в области космоса, безопасности виртуального мира, связь, цифровая связь, физическая связь, транспортная связь, развитие инфраструктуры, здравоохранение. Есть разные сферы, где мы можем вместе работать, идти вперед вместе. Было очень приятно здесь встречаться со всеми вами, с представителями, друзьями из области промышленности. Премьер-министр Казахстана сопровождает меня уже с утра. У нас были хорошие возможности вести переговоры по большому кругу вопросов. И я уверен, что этот мой визит в регион Средней Азии, особенно